discussed about the types of mixture, and we did the types of mixture. That mixture is divided into two category: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture is further divided into two category, that is colloidal solution and suspension. So we will discuss today the type of mixture in which we are discussing the homogeneous mixture, and one of the type of homogeneous mixture is solution. Okay, so yesterday we have discussed what is solution. Solution is the combination of solute and solvent. Solute which is in less quantity, solvent which is in more quantity in the solution. They form a solution. Solute plus solvent, they are forming a solution. Okay, solute which is present in the less quantity and solvent which is present in the more quantity. For example, salt and water. Salt is a solute, solvent is a water. Water, you can take a 1 glass of water, you can dissolve 1 spoon, 2 spoon, 3 spoon salt in that, and you'll make a solution of salt. Okay, in which salt is in present in the less quantity and the solvent present in the more quantity. So solute will be salt, and the solvent is water. Okay, this is the solution. Now think about it. If you are adding 5, 6, 7 spoon of salt into the water, and you keep adding the salt into the water, what will happen with the solution? So try this at your home. When you are dissolving 1 spoon of salt, it will dissolve. 2 spoon, it will dissolve. 3, 4, 5, 6, it will dissolve. After adding, I think 7 to 8 salt, a spoon of salt into the water, it stop dissolving. You actually observe, you are observing that the stop dissolving. Actually it is dissolving into the salt. At the same time the salt is also coagulating, but leave that thing, you will discuss in the class 11. What you will observe superficially, you will observe that salt is stop dissolving into the water. Okay, so when you are dissolving 1 spoon of salt, it is dissolving. When you are dissolving 2 spoon, dissolving. 3 spoon, dissolving. 4 spoon of salt, dissolving. After 7, 8, stop dissolving. So actually, what is that solution? Non, that solution known as saturated solution. What is saturated solution is now? Saturated solution is that solution in which a sufficient amount of solute has been dissolved already. We know how the solute dissolve into the solvent, how a mixture form, because the solvent particle have some interparticle distance. The solute particle occupy that interparticle distance. Okay, the solvent has some interparticle distance. Solute particle, it will break down into small particle and occupy the space provided by the solvent. Okay, but if all the space provided by the solvent has been occupied by the solute, now there is any space left? No, there is no space left. Now the solvent is fully occupied by solute. The uniform distribution of solute is there. Now there is no space left. Then what will happen after adding some more solute in that solution? The solute stop dissolving. Okay, so that solution is known as saturated solution. That solution is known as saturated solution. You can define the saturated solution like this: no more solute can dissolve into the solution is known as saturated solution. Or you can write like this, you can see in my screen, this is written: saturated solution is a solution which cannot dissolve any more of a solute at a given temperature. Now I have written this word, a given temperature. This plays a very important role in this definition. If you forgot to write this word in this saturated solution definition, your definition will be wrong. The reason being, अब simple सा example लो, like आप सबने गुलाब जामुन तो खाए होंगे, है ना? अब थोड़ा सा अपन अपनी भारतीय बात बात पे आते हैं. सो वेन एवर यू आर, क्या बोलते हैं गुलाब जामुन को इंग्लिश में? जो भी हो. Okay, so whenever you are eating gulab jamun,
क्या करती है, मम्मा ने आपको गरम गरम खिला दिया, ठंडा ठंडा खिला दिया, जो भी है, नाउ आपकी मम्मा ने उसको फ्रिज में रख दिया. सो एवर एवर हैव यू ऑब्जर्व दैट कि दैट चाशनी, दैट शुगर सिरप है ना, that start coagulating, sugar start coagulating there. Have you ever observed कि कुछ sugar जो था initially when वो गरम गरम था आपके पास आया, there is no sugar coagulation there, but when you kept that in the fridge or in the refrigerator, you can see that जब वो ठंडा हो गया बिल्कुल, तो you can see some white material like butter, and that sugar Yes, particle ma'am. they start coagulating, और वो कहीं Yes, ma'am. surface पे जम जाते हैं, नीचे जम जाते Yes, हैं. Yes, ma'am. correct. सेम एज फॉर द सो मेनी स्वीट्स जिसमें भी चाशनी वाला काम होता है ना, उसको अगर आप फ्रिज में रखोगे तो ऐसा हो जाता है. ओके एक और एग्जाम्पल आई विल गिव यू. देखो मैं बहुत अच्छी फूडी हूँ, तो मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एग्जाम्पल वैसे ही दूंगी आपको. ठीक है, सो मतलब खाना बनाना, नॉट खाना. सो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू कैन परफॉर्म इट एट योर होम, या आपकी मम्मा से पूछ लेना, उनको बेटरली पता है. सो टेक अ cold water and start dissolving some amount of sugar. Okay, so you add sugar 1 2 3 4 5. Now the sugar stop dissolving into the water. अब क्या करो, ठंडा पानी आपने लिया, अब क्या करो, start heating that solution. Okay, when you start heating that solution, again that undissolved sugar start dissolving. Then you add 1 2 3 more amount of sugar in it, and everything will dissolve in it. Okay, and after some time you will get a thick chashni type material, a thick sugar syrup. Okay, when you keep that solution for cooling, after some time that sugar start again coagulating. ओके तो ये आपकी मम्मा को पता होगा, ये वो करती हैं. ठीक है, अगर उन्होंने कभी भी स्वीट्स बनाई हैं, अगर उनको नहीं तो दादी को तो पता ही होगा, उन्होंने तो जरूर बनाई होगी पक्का से. ठीक है, सो दैट सोल्यूशन क्या हो रहा है, देयर इज अ चेंज ऑफ टेम्परेचर व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ओके, द सैचुरेटेड सोल्यूशन बिकम in a in one type of solution in which more solute can be dissolved. I'm again explaining, when you are adding the sugar into the water, after some time when you have added much more amount of sugar, it stop dissolving in it. Okay, so this means that solution now becomes saturated. That solution becomes saturated. Now you have added more and more sugar, the sugar will undissolve, and you start heating that solution. After heating, the solute start dissolving in it. Means जो आपका पहले saturated solution था, now that solution become something else जिसमें you can dissolve some more solute. Okay, so what is that solution? That solution is known as unsaturated solution. Okay, चलो अभी हीटिंग का फिनोमेना छोड़ देते हैं, हम बिना हीटिंग की बात करते हैं. लाइक इफ वी हैव टेकन 1 glass of water and you have mixed 1 spoon of sugar, वो उसमें डिसॉल्व हो गया. अगेन यू हैव टेकन 2 spoon of sugar, वो उसमें डिसॉल्व हो गया. 3, वो डिसॉल्व हो गया. सो 3 स्पून से पहले, 4 स्पून से पहले, 7, सपोज 7 स्पून के बाद में डिसॉल्व होना बंद हुआ, तो बिफोर एडिंग द 7th स्पून ऑफ शुगर, okay, that solution is called unsaturated solution. Unsaturated solution means you can dissolve some more solute. Okay, when you have dissolved 1 spoon of sugar into the water, that is unsaturated. You have added 2, it remain unsaturated. 3 4 5 6, जब 7 स्पून उसमें ऐड हुआ तो इट विल बिकम सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो बिफोर रीचिंग सैचुरेशन, the solution is known as unsaturated solution. Before reaching saturation, the solution is known as unsaturated solution. So I'm clear about that, saturated solution and unsaturated solution. Okay, so if you heat something, मतलब if you heat a saturated solution, then the solute start dissolving, more solute can dissolve into the saturated solution. This means when you heat saturated solution, it will change into unsaturated solution.
Okay, so I'm clear about that. Now, what is solubility? Solubility of a substance is the amount of solute present in the saturated solution of the substance. The second line you can read. What is solubility? Solubility of a substance is the amount of solute present in the saturated solution of the substance. Okay, जितना भी अमाउंट डिसॉल्व होता है उस सोल्यूशन का, दैट इज कॉल्ड solubility. So tell me, am I clear about the saturated solution solubility and unsaturated solution? Yes or no? Yes, I'm clear. ma'am. Ma'am, can you Okay. repeat solubility one more time? Solubility is the amount of solute that is present in the saturated solution. Just only the amount of solute which is present in the saturated solution is called solubility. For example, if we talk about the this same example, when I have supposed that the this much of sugar is dissolved and the solution becomes saturated, so we can say that the 7 spoon of sugar है ना, dissolving the 7 spoon of sugar into the solvent is the solubility of the solvent. मतलब solubility of a solution that this much of amount will dissolve. Okay. Okay, I'm clear. Yes, ma'am. And what is the role of temperature on the solubility, and what is the role of temperature in the saturation and unsaturation? I think you can understand. Any one of you can explain in very short and small words. What is the role of temperature on saturation, unsaturation, solubility? Ma'am, Yes. if the temperature is increased, so solubility will also. Yes, means the small word we can say solubility is proportional to the temperature. In the simple language, we can say the solubility is proportional to the temperature, means temperature increases, solubility increases, temperature decreases, solubility decreases. And this is the part of your daily routine life. आपकी मम्मा से पूछना, उनको उनको सब पता है अच्छे से, बट उनको ये टर्म्स पता नहीं थी, अब जाके उनको टर्म्स बता देना, ठीक है, कि ये है ये है ये है, वो करती होगी ये सब चीजें. Okay. Now, preparation of a saturated solution. So this is your work. You will perform this at your home. You can take salt, you can take sugar, any soluble material which can dissolve into the water. You can make a saturated solution at your home. So take 50 ml of water in 2 beaker, add salt in 1 beaker with continuous stirring till no more salt dissolve in it. Similarly, add sugar in the other beaker with the continuous stirring till no more sugar dissolve in it. ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो उसको. We get saturated solution of a salt and sugar. तब तक डिसॉल्व करना है जब तक कि वो शुगर डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए. ठीक है, दैट्स व्हाई यू नीड कॉन्टिन्यूस स्टेयरिंग, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपने शुगर डाला, पानी में स्टेयर नहीं किया, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इतना स्लो है कि आपको लगता है कि अरे डिसॉल्व पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो आप स्टेयर करोगे तो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा ना. तो कीप स्टेयरिंग द सोल्यूशन, और व्हेन आफ्टर स्टेयरिंग जब सोल्यूट डिसॉल्व होना ही बंद हो गया, कितना ही स्टेयर करो बंद हो गया, तो उसको छान लो, फिल्टर कर लो, दैट सोल्यूशन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके. So if a mixture are heated, it dissolves some more of solute, that you can also try at your home. ठीक है, under observation of your some elder person like your mother father. ऐसे खुद मत चले जाना, पता चला कुछ जला जुलो के आ गए, फिर बोलते हो कि मैम ने तो बोला था. ठीक है, तो ऐसा नहीं, किसी के ऑब्जर्वेशन में, है ना. ठीक है. The solubility of different substance are different. We know that the solubility of substance varies with the temperature that we know. Now, this second last line, the solubility of different substance are different. Yes or no? कभी आपने कोई चीज डिसॉल्व करके देखा है? कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, कोई आराम से टाइम लेती है, कुछ ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है, कुछ कम डिसॉल्व हो जाती है. चलो मैं बताती हूँ आपको. आप ऐसा करो, ग्लूकोज लो, ठीक है, और एक नमक लो. तो ग्लूकोज आप ना, मतलब, या आप सॉलिड शुगर ही ले लो, ठीक है, या नहीं शुगर मत लो, फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा. सॉल्ट लो और ग्लूकोज लो. आप एक ग्लास पानी में कम से कम 10 to 12 स्पून ऑफ ग्लूकोज यू कैन मिक्स, बट 10 to 12 स्पून ऑफ सॉल्ट आप मिक्स करोगे ना, तो बहुत डिफिकल्टी आएगी आपको, बहुत परेशानी आएगी. अब ट्राई करके देख लेना घर पे. ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल, मैंने ट्राई किया हुआ, इसलिए आपको एग्जांपल दिया. बाकी यू हैव सो मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ट्राई इट एट योर होम. ओके, आप घर पे ट्राई करो, आप बताना मुझे कि कौन किस में जल्दी डिसॉल्व होता है.
Okay, now solubility is not for a solid and liquid only. Solubility, the saturated solution is not only the solution of solid and liquid. The saturated solution is solution of a gas and liquid also. For example, the mineral water or a pond water, jo whatever you are taking, that consists a definite amount of oxygen absorbed by the water. Water के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन जितना चाहिए ना उतना है, ठीक है, जितना उसके अंदर चाहिए, ठीक है। लेकिन जब पानी को आप गर्म करते हो ना, तो आपने देखा होगा, गर्म मत करो पानी को, ऐसे ही आप रख दो, ठीक है। और अच्छे अभी काफी 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप देखोगे कि सरफेस जो उसका बाउंड्री होती है, व्हेन द वाटर टच, है ना, इन द बाउंड्री ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की बाउंड्री पे छोटे छोटे बबल आपको कभी दिखे होंगे, दिखे हैं कभी, कभी आपको देखा कभी आपने? यस मैम देखे हैं। सरफेस पे नहीं बोल रही हूँ, बाउंड्री मतलब जो टच कर रहा है ना सरफेस, जो है ना वहां पर, वो बबल एक्चुअली क्या है, दैट, हाँ जी, दैट बबल एक्चुअली द ऑक्सीजन। ओके, नाउ वन मोर थिंग, लाइक इफ यू टॉक अबाउट द सोडा वाटर, तो व्हेनेवर यू आर टेकिंग द सोडा वाटर, आप कैप खोलते हो, सम मोर अमाउंट ऑफ CO2 विल रिलीज फ्रॉम दैट वाटर। ओके, उसमें पानी में से बहुत सारा CO2 निकल जाता है, ठीक है। लेकिन आपने सोडा वाटर को ओपन रख दिया, तो भी उसके अंदर थोड़ा सा डिसॉल्व CO2 होता है। आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम थिंग लाइक pH वगैरह से आप चेक कर सकते हो, वो आप 12th में पढ़ने वाला, पढ़ना अभी मत पढ़ना, ठीक है, अभी तो काफी है। सो दैट इज द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और ज्यादा अगर आप डिसॉल्व करोगे अंडर प्रेशर, यू हैव डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है, और आपने कैप बंद कर दिया, कैप खोलते ही वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CO2 निकल जाएगा। अब जो फाइनली आपका प्रोडक्ट बचेगा, वो आपका बचेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ मैं बार बार आपको एक चीज बोल रही हूँ,